चलिए अब हम देखते हैं मेरी लिंक्डइन पोस्ट डे 11 से लेकर 15 तक। डे 11 में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और उस दिन आरबीआई ने रेपो रेट कम किए थे बाय 25 बेसिस पॉइंट। रेपो रेट होता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। So before cutting the rate, repo rate was 5.5 and after cutting 25 basis point, it became 5.25%. And it also reduced the SDF standing deposit facility rate from 5.25 to 5%. तो अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है? SDF रेट होता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स गिव मनी टू RBI for short term and it is without any collateral. And RBI also reduced the MSF rate, marginal standing facility rate, again from 25 basis point from 5.75% to 5.5%. तो अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? ये होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड विदाउट एनी कोलैटरल। अब विदाउट एनी कोलैटरल है तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, तो इस पर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ज़्यादा चार्ज करता है। And again, the RBI reduced bank rate from 5.75 to 5.5%. तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है द रेट एट विच RBI gives money to commercial banks but for the long term and without any collateral. And the RBI stood with a neutral stance. That means RBI कह रहा है हम आगे जाके रेट्स को कम भी कर सकते हैं फ्यूचर में और इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम तब की सिचुएशन को एनालाइज करके अपना डिसीजन लेंगे। तो ये न्यूट्रल स्टैंस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डे 11। नाउ लेट्स गो टू डे 12। डे 12 में मैंने लिखा था उस दिन बैंक निफ्टी की रीशफलिंग हुई थी। रीशफलिंग से पहले बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक्स थे एंड आफ्टर रीशफलिंग it got additional 2 banks and now it became 14 bank. Yes Bank and Union Bank were added to Bank Nifty. HDFC and ICICI Bank will see a drop in their weightage. तो अब अगर येस बैंक और यूनियन बैंक को ऐड किया है तो किसी ना किसी की परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, इसलिए HDFC बैंक और ICICI बैंक की वेटेज में कम किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन ऑन डे 13। डे 13 में HDFC बैंक की रेटिंग आई थी फ्रॉम केयर एज रेटिंग एंड केयर हैज रिफर्म्ड ऑल एग्जिस्टिंग रेटिंग्स ऑफ HDFC बैंक। जो केयर एज ने पहले रेटिंग दी थी वो अभी भी उसी पर कायम है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने HDFC बैंक को पहले केयर AAA रेटिंग दी थी जो कि स्टेबल है और बॉन्ड्स को भी रेटिंग AA+ दी है जो कि वेरी स्टेबल है और डिपॉजिट्स को भी हाईएस्ट रैंकिंग दी है। This means the bank has a very strong profile and it has very low chance of default risk, stable outlook with no major negative concerns. Now let's see what I have written in day 14. इस दिन ICICI बैंक ने ICICI Prudential Asset Management Company जो ICICI की AMC है उसमें 2% स्टेक को बाई किया था for 2140 crore and this is all payable in cash. ICICI Bank currently holds 51% in ICICI AMC. After the deal, it will become 53% and somebody gains, so somebody have to lose. PCHL currently holds 49 and after the transaction, it will hold 47. The main purpose of acquisition is to maintain ICICI Bank's majority stake in ICICI AMC. Now let's see the day 15. इस दिन पे मैंने HDFC बैंक की बैलेंस शीट को एनालाइज किया था, मोटा मोटा ज़्यादा नहीं। टोटल एसेट्स हैं 40 लाख करोड़ और डिपॉजिट ग्रू टू 28 लाख करोड़। बोरिंग रिड्यूस, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। Reserves increased, equity capital jumped to 1536 crore, investment increased, that means a good liquidity, and other assets mainly loans rose to this amount, that means, and the loan book looks good on the basis of growth. So these were all about day 11 to 15 and if you found it interesting you can subscribe to my channel because I will upload this kind of content. Thank you.